Hi, let's see this set. So this is the 13th set of our 69 series. So let's read the set. Before you watch the solution, I would highly recommend you to first solve the set, then watch the solution, and also keep a stopwatch with you so that you can look at a time how much time you took to solve this set. So yeah, hope you guys solved the set. Let's see the solution. So it is given that in a village survey, it was found that out of 750 farmer families, 40 own land of 2 or less than 2 acres. Okay, so 750 farmer families are there, and out of them 40%. So 40% of 750. So if I'm not wrong, it is benefited from 4 government scheme, that is FBY, and here what I found that these 300 families, these are the 300 families who benefited from these schemes. Let's read ahead. The following information is available about the farmer families benefiting from the 4 schemes. 60% of the family benefited from the scheme FBY, 56% benefited from this one, and 5% of the family benefited from FBY only. Okay, so till now reading 2 points, what I found here, this is the question which are from a Venn diagram topic. So if you have no idea about Venn diagram, I would highly recommend you to watch the session of Venn diagram. I took the session and I have solved all kind of sets related to Venn diagram. Let's say 2 Venn sets and 3 or 4. So I have solved all the sets. So you can watch those session to get a basic ideas. So let's see. Apart from this, you can get what I'm teaching here or the solution of this question. So let's see. So it is given that there is 4 schemes. तो सीधा समझ में आ रहा है कि 4 स्कीम है, तो there should be a 4 Venn diagram set. So let's make a Venn diagram set, a Venn diagram first. So this is how Venn diagram might look like. Okay. Okay, so don't mind the diagram. It is just for solution. मुझे diagram से कुछ लेना देना नहीं है. Solve करने से मतलब रखना है. Let's read the set. That's 60. Okay, so naming कर देते हैं इनका. So this should be for FBY. This should be for KSY. This should be for KSN. And this should be for KCC. 60% of families benefited from scheme FBY. So FBY से 60% benefit किए. तो what it mean? I could simply write this value, that is FBY, nothing but 60%, right? So because I'm not trying to do like a numbers here, जो percentage है मैं इसमें अभी के लिए solve करूँगा. If needed, I will calculate number later on. 56% families benefited from KSN. So KSN, here it is a KSN, 56% benefited from this. 5% of family benefited from scheme FBY only. So here is, you can see FBY only. This is the portion you can see only FBY there. So इसकी value जो आगे 5 आ जाएंगी. 4% families benefited from KSN only. So KSN, here it is a KSN only. This is the part KSN only wala. So 4%, it means the value for this part is 4. 12% family benefit from scheme KCC only. So here you can see the KCC only. KCC के अलावा कहीं पे overlap नहीं है. So yeah. So this is a 12%. Okay. Now these 2 pointers we covered already. 7% of family benefit from the scheme FBY and scheme KCC only. So 7% are those family who benefited from these 2 schemes and only these 2 schemes. Okay, so FBY or KCC only कहाँ पे FBY and KCC? You can see here is the KCC or here is the FBY. So
you can see this part. In this part only FBY and KCC are there, so the value for this part is 7%. 6% of the family benefited from FBY and KSY only. Okay, so FBY and KSY only, so you can see this part here only the value is that is FBY और KSY ही है, उसके अलावा कोई और ओवरलैप नहीं कर रहा है. So इन दोनों का इसका जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज शुड बी 6%. Okay, 3% of the family benefited from FBY and KSN benefited from BY and KSN. So you can see here is the KSN, this is the part you can see where only FBY and KSN are overlapped. So इसका वैल्यू जो हो जाएगा this is a 3%. 6% or 5% family benefit from KSN and KCC only. KSN and KCC, so this is the part, इसकी वैल्यू क्या होगी 5. Okay, so यहाँ तक हो गया. So this data done. Next I think it is easy set क्योंकि सब कुछ डायरेक्ट फिल होते जा रहा है. It is not a tough, मैं अभी समझ में आ गई easy set है ये. So you can say this should be easy set because I have like a good chunks of data here available. So it doesn't took a time. अगर आपको ये बनाने नहीं आता वेन डायग्राम तो अलग बात है, बट अगर आपको ये बनाने आता है वेन डायग्राम, इस तरह से सॉल्व करने आता है, then it is a very easy set. 8% of the family benefited from these three but not from KCC. तो मैं देखूंगा कि कहाँ पे KCC नहीं ओवरलैप कर रहा है, बाकी थ्री ओवरलैप कर रहे हैं. सो यू कैन सी दीज आर द पार्ट जहाँ पे ये KCC और सारे कर रहे हैं. तो कौन सा पार्ट है जहाँ KCC ना कर रहा हो? यू कैन सी दिस पार्ट. Here KCC is not overlapping, but FBY कर रहे overlap कर रहे हैं, ये भी overlap. So this part value for this part is these three, but not KSY. So KSY, तो अगर मैं इसे हटा दूँ KSY के part को, so you can see this part. यहाँ पे मेरा FBY भी overlap कर रहा है, KSN भी overlap कर रहा है, KCC. This should be a 4%. Now this is done. 20% of family benefit from exactly three schemes. So 20% families are there who benefited from exactly three schemes. So exactly जो थ्री की वैल्यूज मुझे मिल गई यहाँ से. Okay. Exactly three. So value for this is, I would simply say it is a 20%. And 25% of the family benefit from all four schemes. Okay, all four कहाँ पे है? You can see this part. ये जो part है ये all four में आ रहा है. ये FBY में भी है, KSY में भी है, KSN में भी है, KCC में भी है. So value for this is 4%. Sorry, not 4%, 25%. 25% family benefit from exactly one scheme. So exactly one is also given. Exactly one जो है ये 25% total होगा. Okay, so let's see अब क्या कर सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट मैक्सिमम डेटा तो हमने फिल कर लिया. लेट्स गिव देम अ नेम. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, this should be C, this should be D, and this should be E. Okay, let's solve this. So because it is given to me exactly one is 25%. Okay, before I go ahead exactly one, मैं ये देखूंगा exactly 3. You can see this is exactly 3 portion. These are the 3. ये जो है ये exactly 3 वाले हैं, तो इनका सम जो होना चाहिए 20% होना चाहिए. बट यू कैन सी सम ऑफ दिस टू वैल्यू इज इटसेल्फ 12. इनका अगर वैल्यू 12 है तो ए और सी का वैल्यू कितना होना चाहिए? सो ए प्लस सी आई कुड सिंपली से दिस वैल्यू नथिंग बट 8, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू 12 बन रही है तो इनका सम होना चाहिए 8, बिकॉज टोटल सम कितना है 20. इट इज गिवन हियर exactly 3. So from here I got a and c value, that is 8. Okay, so value for a plus c is equal to 8. Now exactly 1 is 25%. So exactly 1 is 25%. So you can see this is the value for exactly 1, this is the value for exactly 1, this is the value for exactly 1, this is the value for exactly 1. तो अगर मैं इनका सम करूँ तो मुझे 25% चाहिए. बट सी द सम इज व्हाट 5 plus 4 is कितना बचा 25 टोटल है, तो ये 4 बचा. तो वैल्यू फॉर ई इज नथिंग बट 4. तो ई की वैल्यू क्या आ गई 4. तो यू कैन सिंपली रिमूव ई. यू डोंट नीड टू राइट ई देयर. जो होते जा रहा है उसको हटाते जाओ सो दैट बाद में ज़्यादा वेरिएबल ना दिखे हमें. ओके, नाउ लेट्स, या दिस इज अ पार्ट, इस पे ध्यान देते हैं.
अब देखो मुझे यहाँ पे अगर एक की वैल्यू निकालना है तो आई कुड सिंपली सी दिस पोर्शन, यू कैन सी ये जो पार्ट है इतना, इसका सम मुझे पता है कितना है इसका सम, दिस इज 60। तो अगर मैं सिंपली इसको ध्यान में रखूँ और इसका सम करूँ तो लेट्स सी कितना हो रहा है इसका सम। सो द 5 plus 6 is 11, okay, 11 plus 8 is 19, 19 plus 3 is 22, 22 plus 4 is 26, 26 plus 7 is 33, 33 plus 25, okay, 33 plus 25 is nothing but 58। तो 58 ये हो गया, टोटल 60 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 2 हो गई है, राइट। तो सम ऑफ दिस इज 58, तो a की वैल्यू बिकम 2, so value for a is 2। एंड जैसे मुझे a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 2 जैसे ही मिली, आई कुड सिंपली से अगर a 2 है तो c कितना होना चाहिए, तो इरेज दिस c एंड यहाँ पे 6 लिख दो। दैट्स व्हाई सेड इट इज इजी सेट, सारे वैल्यूज तो निकल ही गए। अब क्या बचा है, अब बचा है ये देखो इसका सम, ओके, d, यू कैन सी हियर इट इज द 56 गिवन टू मी। तो अगर मैं इनका सम निकाल दूं तो 56 में से माइनस कर सकता हूं इजीली। व्हाट इज द सम, 25 plus 5 should be 30, 30 plus 30 plus this 10, 40, 40 plus this 12 is 52, 52 plus 3 is 55। तो 55 दिस वैल्यू इज 55, तो बचा क्या 1, तो 1 बचा, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो वैल्यू फॉर d इज 1। नाउ अब b कैसे निकालना, ऑब्वियसली सिंपल है। अगर ये परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, इफ दीज ऑल वैल्यूज आर इन परसेंटेज, तो इनका टोटल सम कितना होगा, टोटल सम शुड बी 100%, राइट। तो if I calculate all these values, so I could simply say this whole portion should be a 60, right, this whole portion should be 60। so what left, at this value 10, 10 plus 12 is 22, 22 plus 5 is 27, 27 plus 1 is 28, 28 plus 4 is 9, 28 plus 4 is 32। so 60 plus 32 this value total, इनकी टोटल कितनी बन गई, दिस शुड बी 92, टोटल 92 बन गया। और ये जो b है इसका वैल्यू जो है टोटल 100 है, 100 में से 92 माइनस कर दो तो व्हाट लेफ्ट, लेफ्ट 8, 8 बचा है, तो इसकी वैल्यू 8 आ गई। सो या इजी सेट, सब कुछ मिल गया। बस अब मुझे शायद यहाँ कैलकुलेशन में खेलना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज बेनिफिटेड फ्रॉम KSY scheme only and KSY and KCC scheme only। okay, so KSY scheme only, you can see KSY scheme only, ये वाला part, this is the part 4%, तो ये 4 हो गया, डिवाइडेड बाय, रेशियो निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज KSY and KCC, KSY and KCC, दिस वैल्यू 8%। तो इसका व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड इसका 300 का इतना परसेंट, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है वैसे तो, मैं बट बता रहा हूँ ऐसे अगर ऐसा कुछ है तो आप यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दिस, यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टू वैल्यू 4/8, बिकॉज ये तो सेम ही रहेगा ना, अगर आप इसका परसेंटेज भी निकालोगे तो सेम ही रहेगा, तो सिंपली इसमें खेल लो तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 1/2, एंड द ऑप्शन डी इज आंसर। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फैमिली गॉट KSY स्कीम, KSY स्कीम में कितने परसेंट फैमिली थे, तो टोटल हमें इसका करना पड़ेगा, लेट्स डू द टोटल। सो यू कैन सी दिस इज द 10 and this is 9, 19, 19 plus 6 should be 25, 25 plus 25 50, and 50 plus 10 is 60, तो इसकी वैल्यू आ गई 60। so answer for option 2 is 60, sorry question 2 is 60। the difference between number of families benefited, okay now you can see number of families पूछा है, नंबर मुझे बताना पड़ेगा अब यहाँ पे, number of families benefited from KCC scheme and KSN scheme was, तो KCC scheme में कितने टोटल था, what is the total of KCC scheme, तो आई कुड से इसका जो टोटल है KSY का, अभी मैंने जस्ट निकाला, इट इज 60, राइट। KCC का मुझे निकालना है, KSN का तो मुझे पता है 56 है, तो KCC निकाल लो, तो KCC का कितना होगा, दिस शुड बी 10, सॉरी 20
20 plus 11 is 31, 31 plus 2 is 33, 33 plus 7 is 40, 40 plus 29, 69. So KC का वैल्यू जो है टोटल 69 है. So 69 minus 56, क्योंकि परसेंटेज में तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. You can see 56% of 300 minus 69% of 300. अगर मैं ऐसे करूँगा तो 300 तो कॉमन ही है ना, तो मैं इतना मेहनत क्यों करूँ. ओके, ये साइन आगे पीछे कर लेना, डिफरेंस है. ओके, डिफरेंस है ये. तो इतना मेहनत क्यों करूँ, मैं सिंपली इनका डिफरेंस देख लूँगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस. तो इनका डिफरेंस कुछ बन रहा है 13, राइट. सो 13% में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ. 13% ऑफ 300, दिस शुड बी माई आंसर. सो 3 into 13, that is 39. So answer for this is 39. The number of families benefited from these three scheme but not from FBY. FBY में नहीं हो. Okay, this is FBY. FBY में नहीं है, बाकी तीन में है. तो this value 6%. Okay, so 6% of 300. This is what they are asking. 6% of 300. Simply cancel 0 0. 3 6 are 18. So value for this is 18. Easy set. अगर आप ये अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो यार बहुत बड़ा पेनल्टी है.